अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 614 का क्विज़ नंबर 2 का सॉल्यूशन। बट क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स और डिफरेंट असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज क्विज। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अ टिपिकल साइकिल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द चेंज इन डेटा वेयर हाउस कंप्राइजेज ऑफ द सीक्वेंस। जो सीक्वेंस है वो ये है, डेवलपमेंट, QA, प्रोडक्शन। द आंसर इज दिस, डेवलपमेंट, QA यानी क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रोडक्शन। Next question number 2 is in context of requirement definition phase in Kimball's data warehouse development approach, activities like debriefing, documentation, and prioritization are considered to be the part of dash. The answer is post collection. Answer is post collection. Okay, question number 6 is technical architecture design supports the communication about technical requirements. First is within the team, upward to management, outward to vendors. Both all these terms are included in this. The answer is 1, 2 and 3. The answer is 1, 2 and 3. Okay, next question number 4 is Bill Inman argues that our requirements are well understood only after data warehouse is populated. The answer is data warehouse is populated. Next question number 5 is as per Kimball, dash is the main operational process. The answer is business process. Answer is business process. Okay ji, next question number 6 is in life cycle data track. We begin with translating the requirements into dimensional model which then transforms into dash physical structure. The answer is physical structure. Okay, next question number 7 is users do not care how advanced the front end of your data warehouse is. What they care is that they care about they should get information in a timely manner and the way they want. The answer is this. Okay, next question number 8 is in context of the most fundamental data warehouse lifecycle model, which of the following is not one of the data warehouse design activities? The answer is system vision development. Answer is this, यानी ये included नहीं होता, ये 3 included है. Okay, next second last question number 9. As per Bill Inman, our data warehouse in contrast with classical approach is क्या है? Data warehouse data driven है. The answer is data driven. Last question is in 4-cell quadrant technique. The quadrant's vertical axis refers to the time, the potential impact or value to the business. The potential impact or the value to the business. So we have completed our 10 MCQs of today's quiz of CS 614. आई होप आपकी हेल्प हो जाएगी। सारे सेम नहीं होते, लेकिन अगर आपके पास कलेक्शन है बहुत सारी क्विज़ेस की तो काफ़ी सारे आपके सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।